welcome back to Code with Bahuli, and today we are gonna know how to use Scanf. Okay, so like basically जब हमने basics किया था C language का, तब I wrote like it is used for taking values from the user. ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो आज तक अभी तक का कोडिंग किया है, in that we have just written the values inside the code and then only we have executed it. But what if we want to input the value from the user? ठीक है, तो उसका आज हम एक एग्जांपल लेंगे. ओके, सो include stdio.h, then of course we are gonna write include kunayo.h, and of course यहाँ पे I want to specify one thing. ये जो है ना, ये वाला स्टेटमेंट इज स्पेसिफिकली फॉर सी ओनली. तो हम लोग सी में हमेशा प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ करते हैं, बट ये वाली जो लाइन है ना, ये यू कैन ऑल्सो यूज इन सी प्लस प्लस. उसमें ये मैंडेटरी होता है, एंड उसमें यू यूज़ सी एल आर एस सी आर एंड गेट सी एच. ठीक है, ये वाली जो लाइन है, okay, so this can be used in C++, and C++ में there is a difference between C and C++ is that यहाँ पे we use printf and scanf in C, and in C++ we use clr, scr and getch. Okay, so we will write a word main statement here. ठीक है, तो अभी के लिए let's take the format specifiers. वो हमको पता है, राइट? वो हम लोगों ने किया था, एंड मतलब %d, वो सब तो याद है, राइट? सो लेट्स begin with the actual program. Let's take an id, semicolon, or name. Name usually, चलो I'll take 15, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं. ठीक है, and let's take अपना char gender. Okay, let's take 0 for now. This is a boolean value actually, like okay, let's keep it 0. Then float में we are gonna write let's take salary. Salary, let's take it in not in float but in double. Okay, and what else can we write here is let's keep it this much precise, and let's write a printf statement. Enter id, scanf %d, because %d I have used because इधर int है. Okay, int के लिए it's %d. So here comma करके we are gonna write ampersand and we are gonna call the id. Okay, so I'll just quickly copy paste, my favorite part, copy pasting. Then we are gonna write here name. We are gonna character के लिए we use C, but name is in string. You remember, right? Name जब भी होता है we have to use %s. Okay, so right here again copy pasting, and we are gonna write here salary. You can actually write short में sal also. I'll just quickly change this. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, just write sal. Okay, so now scanf के लिए you have seen
यहाँ पे we have used a major step. Scanf का you can say this is a syntax. Here you have to mention what the data type is of the variable, like okay, this is integer, right? ID ka data type is integer, so we have written here this. Then you have to write a comma, then ampersand, and then this variable. Okay, same we have done for this. Okay. oh, मैंने इधर बीच में जेंडर नहीं लिखा. oh, I'm so sorry. जेंडर के लिए एंड एक सेकेंड, मैंने इधर सैल क्यों लिखा है, मैंने इधर एफ आना चाहिए, सॉरी गाइस. एंड जेंडर, जेंडर भी लेट्स टेक इट सेम ओनली. ठीक है, तो इसके नेम के बाद जेंडर है, राइट? सो यहाँ पे वी विल राइट जेंडर. इट्स इन कैरेक्टर एस, तो वी विल मेंशन व्हाट इज द जेंडर. ओके, सो यहाँ पे आएगा जेंडर. I have for now mentioned 0. I think let's take it 1 year. It's like 0 होगा तो बॉय या गर्ल वो स्पेसिफिक हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते. लेट्स टेक इट 5 फॉर नाउ. ओके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट हम लोग को ये, लेट्स जस्ट रन दिस मच एंड सी क्या होता है. कंपाइल एंड रन करते हैं. पॉइंट मेन में एरर दिखा रहा है. व्हाई? बिकॉज इट मस्ट बी इन रिटर्न. ओके, तो ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे वी शुड एक्चुअली चेंज दिस मेल. सी, कुछ चीज़ें होती है, समटाइम्स यू डोंट नीड टू राइट void main, you have to just write main. ओके, आईडी अगर मैंने इधर एंटर कर दिया 1 2 3 4, चलो नेम what should I write? Let's take Natasha, gender girl, salary, let's say salary is 70,000. okay, ये हो गया. This is one way of actually writing, like using scanf, and you can print your values like this, and you can take the input from the user and run it. But there is one more way that I'm gonna show you later. See, I've done actually some things before. This is a simple program of simple interest. Okay, so here I have, what I have done is I have taken int p t r I. So what is this p t r I? P means principal value, t means time, the duration of the money that is gonna be in the bank. Okay, so the rate of interest that is gonna be on that amount, and this is the simple interest I have denoted with I. Okay, the same thing we are doing here that we did in the previous code. We are gonna do the same thing. यहाँ पे मैंने सेम लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट को हमने यूजर से लिया है, देन ड्यूरेशन भी हमने यूजर से ही लिया है, देन इंटरेस्ट भी. then this is the formula of simple interest. Simple interest is equal to principal into t into r upon 100, and then print f. जो हम लोग को ये वाली वैल्यू आएगी ना गाइस, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस. फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया. ठीक है, see this, the printf, the simple interest is equal to लिखने के बाद a simple interest is in the integer form. तो यहाँ पे %d लिखा है and I. So this is another way you can just simply call it in the print statement itself, and you can print it. See, I'll execute this one and show. Principal amount, let's take it's
1000. Duration, like let's take 2 years. Simple interest, let's take it 3. Okay, see this. The simple interest is printed, but we have not used scanf anywhere. Okay, so see here. Did we use scanf anywhere? Where? Sorry. Yeah. So did we use anywhere scanf? No, right? But still, it's using. यहाँ पे हम लोग actually we are not taking any value from the user here. Okay, we are just directly printing it. यहाँ पे इट्स लाइक द कैलकुलेशन हम लोग जो नॉर्मली पहले के हमने कोड्स में किया था वैसे ही इट्स द सेम, जस्ट यहाँ पे कोई स्कैन लाइक वैल्यू कॉल एज इन लाइक हम लोग यूजर से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे वो कैलकुलेशन हो रहा है एंड देन इट्स गेटिंग प्रिंटेड. ओके, another one more example is of marks. I've taken int a b c float p. ठीक है, यहाँ पे आई हैव रिटन द मार्क्स कोड इन सब्जेक्ट 1. देन मैंने स्लैश एन किया है ताकि आई वांट द थिंग दैट आई एम गोना इनपुट इन द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, द सेम गोज विद सब्जेक्ट 2, the marks code in subject 3, and the same thing like simple interest. यहाँ पे I have done the calculation, the total, the percentage that I have to remove. So मैंने add किया है all the 3 subjects के marks को divided by 3, and वैसे we are gonna get percentage. The problem here is I can't actually multiply by 3. अभी I'll show you um, why I haven't written it into 100. I don't know, we just get an error in that. I'll take 50 मिला सब्जेक्ट 1 में, सब्जेक्ट 2 में 70, सब्जेक्ट 3 में 80. See, it's we are getting the percent, but in the same way if we do multiply by 100, what's actually the like formula? See this, same values लेते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग लेता है, यही लिया था I guess. See, it's showing something else. So that's the problem with it. So you don't have to do this, just use this much. Okay, see this. Okay, this is the actually the it's getting the correct value without actually using the correct formula. I don't know why is it so, but yeah, we have to use this formula and see. Okay, for calculating the percentage you have to actually use this formula only in C. Okay, so yeah, that's it for today, and if you like the video, do hit the like button, and if you're new to the channel, don't forget to subscribe. We'll see you next video. Bye bye.